तो I saw some jugnus also. Vimal Bolo Zuban Kerasi. Is it not venomous? इस दिन में पता है क्या हुआ था? एक्चुअली वी वेंट फॉर लंच एंड देन जेन में अलाकाटे अवेलेबल नहीं था, तो दे सेंट अस टू अरेबिका, बट वो सिर्फ एक कॉफ़ी हाउस है, तो वहाँ पर सिर्फ कॉफ़ी एंड स्नैक्स मिलते हैं, वहाँ पे लंच सर्व नहीं होता. देन दे अगेन सेंट अस बैक टू जेन. इस तरह ने सबकी खटिया खड़ी कर दी. कर दो. इस तरह को बिल्कुल भी पेशेंस नहीं है. अगर कोई गलती कर दे तो सुनेगा ही सुनेगा. क्या होगा? 2 गलती करी, 1 गलती पे तो छोड़ दिया था ना. तो कॉम्प्लीमेंट्री के लिए उन्होंने पता कितनी सारी मंचेस दी हैं. देखिए, दिस इज हाउ दे आर ट्रीटिंग मी. मिस्टर राय की खातिरदारी में इतने सारे मंचेस हैं. आई डोंट नो. गाइस अभी शाम के 6:30 बजे हैं. 6:30 बजे इनका एक टूर था, बॉनफायर टूर, जो एक लोकेटेड स्पेस में इन लोगों ने सेटअप किया था. बट आई डोंट नो इफ़ यू कैन हियर द क्लाउड्स. तो बारिश हो रही है बाहर, मैं आपको दिखाती हूँ. Guys, just look at the weather. It's 6:30 in the evening and it was raining. Chairs, table सब कुछ गीला हो चुका है. It's still drizzling. तो गाइस देखिए, रात में ऐसी लगती है ये प्रॉपर्टी, फुली लिट अप विथ लाइट्स. इट्स सो ब्यूटीफुल. एंड आज फुल मून भी है, तो मैं आपको अपना वे टू द विला दिखाती हूँ. अ वॉक टू रिमेंबर. यहाँ पे गाइस जुगनू भी हैं. तो आई सॉ सम जुगनूज ऑल्सो. आई डोंट नो इफ इट इज़ कमिंग इन द कैमरा, बट या यू विल सी. ये जुगनू चमक रहे हैं रात में. बहुत सारे जुगनू हैं गाइस, तारे जैसे चमक रहे हैं रात में. दिख रहे हैं? देखो, ये जो जितने भी ये लाइट ब्लिंक हो रही है ना, दैट इज़ ऑल जुगनू. एंड बहुत ही अंधेरा है इस साइड, इसलिए आपको इतने अच्छे से दिख रहा है. सो वी हैव दी स्ट्रीट लाइट्स ओवर देयर, ताकि आप अच्छे से रात के 11-12 बजे भी वॉक कर लो. Guys, you can hear the sound of the jungle. अभी रात के 11:30 बज रहे हैं. And you can hear different types of sounds. This is me walking till my villa. So this is one villa. You can see in the night कैसे lit up है ये पूरा villa. एंड ये जितना भी आपको लाइट दिख रहा है, दैट इज़ जस्ट बिकॉज आज फुल मून है. Guys, the day was very beautiful. I loved every bit of it. Connecting to nature बहुत ही अच्छा लगता है. विला का टूर रात का भी देती हूँ आपको. आप देखिए, लाइट इन वार्म लाइट्स में विला का क्या लुक आता है. आई लव्ड इट.
तो यहाँ का फूड भी ज़रूर ट्राई करिए. द शेफ्स आर गुड, यू विल लव इट. मेरी जो बकेट लिस्ट थी उसमें 2 तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए हैं, विच वॉज ड्राइविंग इन द माउंटेन्स एंड अ डे इन लग्जरी. 3rd वाला बताती हूँ. आई हैड दिस फीलिंग कि मुझे एक फ्लावर बेसिकली प्लक करना है. आई नो फ्लावर प्लक करना इज़ अ बैड हैबिट, बट गाइज इवेंचुअली इट डाइज. सो प्लक करके किसी को खुशी मिलती है एंड इट ब्रिंग्स स्माइल टू योर फेस, सो इट्स फाइन. तो आई वॉन्टेड टू प्लक अ फ्लावर फ्रॉम द जंगल विच आई डिड. ये है मिस्टर आई. तो गाइज सिर्फ इसको कॉर्नर पर ना वाईफाई आता है. तो मिस्टर आई इज लाइंग डाउन लाइक दैट on this L-shaped couch because this property is in a jungle. तो यहाँ पर नेटवर्क नहीं आते हैं गाइज. so this happens. कल सवेरे का टूर बता देती हूँ गाइज. इन लोगों ने कल सवेरे का जंगल वॉक टूर रखा है. दैट इज सम 1 hour का टूर विच इज़ 11 o'clock in the morning. 11 o'clock मैं आपसे मिलती हूँ. अभी के लिए गुड नाइट गाइज. यू कैन सी द साउंड ऑफ द ट्रीज. ब्रीज जो चल रही है, feels so in nature. So guys, good morning. This is what I'm wearing and just now I'll be going and having my breakfast. तो breakfast के बाद मैंने आपको बताया कल रात को कि I'll be going for the jungle walk. तो आपको भी अपने साथ जंगल वॉक कराने ले चलती हूँ. चलो अभी जाकर के ब्रेकफास्ट करते हैं, उसके बाद जंगल वॉक पे जाते हैं. So you can see this is a strangler fig tree. This is called a strangler fig tree. This is like 120 to 150 years old. This is actually a parasite tree. So there is one tree inside which is strangled and killed it. If you cut this tree, you will get the hollow log. Inside tree is dead. So this happens in a wild when the bird sees different kinds of figs, right? They come and drop on the branches. In that drop, they have a seeds. In the monsoon, the seeds will be sprouted and the root will be strangely coming down. And once the roots touch the ground and it strangle the complete tree. Collected resin from this, which is actually used for the mosquito repellent. इसके वजह से अगरबत्ती भी बनती है. And they use the bark of these trees also. I'll just see if I can get any small bark. It is called booswedi also. Do you get any smell? Yeah. You getting any smell? Yeah, What smell? fire smell. Fire smell? Don't. So this is the first time I'm seeing a frankincense tree. This is the gum. It's like that. This one you put, no? What is it? Blooper. How come it's becoming like into a bubble? This is the incense. So guys, this property has such a big golf club. तो आप देखिए, this is the golf course, a huge one. Fragment में बहुत सारे हैं आगे भी. So जब आप फॉरेस्ट वॉक करते हो, you get to see this. बताइए क्या है? ये हाँ. मक्का. वाव. कहाँ दिख रहा है तुम्हें मक्का? ऐसे होता है मक्के के पेड़. What exactly is this? Any guesses? Which plant is this? He's asking. Any guesses? पेपर ही होगा, ब्लैक पेपर या अरे कुछ. ब्लैक पेपर के तो क्रीपर था ना. क्रीपर. This is some kind of pepper only, but What's tasty? Am I feeling eating a honey? thank you. This is cardamom. So this is the Nilani gold species. So this is a green cardamom. This is hybrid from Kerala. So these are the pinnacles of the cardamom.
And the white ones, those are the pods of the cardamom. And these also like yearly one harvest. These, if you can see, this is all cardamom. Yes, see. लो खाओ Sure. खाओगी पहले दिखाओ तो. Cardamom. Okay, this is cardamom. प्यार से समझाएंगे धीरे धीरे से वो भी अपनी जुबान में अब सब लोग इलायची की ऐड कर ही रहे हैं तो मिस्टर आई भी इलायची का ऐड करते हैं. विमल बोलो जुबान केसरी. ये तो अपनी जुबान है. I hope you're enjoying the nature walk with me, guys. So when it's young, it's like a pink in color. Sure. The leaves. This is bay leaf. Leaves, when it's young, it's like a pink in color. So when it's ripen, it turns as a green in color. So by that green, we need to harvest it and sun dry it. If it's dried on the tree, you won't get that flavor. So because the whatever the moisture it is absorbed by the tree itself. It takes back. So you won't get that flavor. This is the Coorg lemon tree. So lemon also there. One is up, which is not है ही नहीं. big enough, which is actually grow like up to like 80 to 90 grams. So this is endemic to Coorg only. So this is more sour than the normal lemon and the skin wise more thicker than the normal lemon. In Coorg language this is called kaikuli. And the behind the banana plantation, those are the Elaichi bananas, the small yellow one. And this side, these are all the 60 plus years old Robusta plantation trees. So the reason why this is short and this is big, we trim coffee tree every year. Trimming is, if you not trim, it becomes like a canopy. So when the harvest season, it's like a manual harvest. So you need to go inside, choose the ripe ones and hand pick only. So imagine if it's like this big, can't reach up and also harvest. And another reason is like if everything become like a canopy, there are lots of wild animals will be inside. There might be a dangerous like mammals like leopards, wild boars, porcupines, like that, and as well as snakes and all. So guys, there are totally 9 grounds and 4 तो पूरा full working condition में है. There are 5 more under construction. Oh. Snake. It's not venomous. Is it not venomous? This is a rat snake. Oh God. That's the snake which left the skin. So I think you won't find this one. I've never seen a snake. You see what I mean? Oh my God. Did you see Oh, it's there. It's there. Guys, chill. It's a rat snake. This side is full forest, plus their coffee plantation, plus pepper plantation, cardamom, bay leaf, everything. गाइस, आपने देखा कि हम जब वॉकिंग टूर पर गए थे तब we found a rattlesnake also. So the person who was explaining, he tried to catch that, but it seems rattlesnake आपको bite नहीं करते हैं. तो thank God कुछ हुआ नहीं.
नाइट टाइम पे एक टूर होता है, दैट इज़ नॉट फॉर मैनी पीपल, ओनली 15 पीपल कैन टेक दैट टूर पर नाइट, ताकि फॉरेस्ट को भी डिस्टर्बेंस ना हो. तो यू हैव टू बुक दैट इन एडवांस. एंड ये आपको अंदर लेकर के जाते हैं, एंड जितने भी नॉक्टोरियल एनिमल्स एंड रेप्टाइल्स एंड स्नेक्स एंड एवरीथिंग आपको जंगल में देखने को मिलते हैं. तो इफ़ यू आर अ पर्सन जिसको ज़्यादा ही एडवेंचर पसंद है, देन यू शुड बुक दैट. बाय द वे, कल शाम को बारिश हो रही थी, तो आई डिड नॉट फाइंड इट सेफ टू गो आउट देयर इन द जंगल बिकॉज इट ऑलरेडी रेन एंड इट विल बी डैम्पी एंड पच होगा. बाय द वे, दिस वीडियो इज़ नॉट स्पॉन्सर्ड. आई होप ये स्पॉन्सर्ड होता, बट ये स्पॉन्सर्ड नहीं है गाइज. आई बुक्ड माई प्रॉपर्टी थ्रू अगोडा. सो गाइज, दिस वॉज माई ब्यूटिफुल बर्थडे व्लॉग. आई होप मेरा व्लॉग आपको पसंद आया हो, मेरी इस ब्यूटिफुल प्रॉपर्टी टूर आपको अच्छी लगी हो. अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए गाइज. एंड ऑल्सो एक शेयर तो बनता है, सो डू शेयर दिस वीडियो. Also guys, please don't forget to subscribe to my channel. I'll be coming up with more such videos. Guys, thank you for watching. Bye. सो गाइज, दैट वॉज माई ब्यूटिफुल डे एंड आई होप आपको मेरा वीडियो ये पसंद आया होगा. अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड लेट मी नो, एंड डू कमेंट एंड लेट मी नो हाउ यू लाइक दिस प्रॉपर्टी.